आज हम एक इंडियन लड़की का व्लॉग देखने वाले हैं जो कि ढाका विजिट कर रही है। इंडियन व्लॉगर हैं और ढाका में भी कहाँ विजिट करी है, गुलशन। भाई तो गुलशन तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो उसको ट्रैवल कर रही है एक इंडियन व्लॉगर। तो चलिए आज हम उनका व्लॉग देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई कोई भी इंडियन अगर विजिट करता है, ट्रैवल करता है गुलशन, तो उनका एक्सपीरियंस और उनका रिएक्शन क्या है ढाका सिटी के गुलशन वाले एरिया को देखने के बाद। तो आइए आज की वीडियो को देखते हैं। Hi everybody, this is Srishti. Welcome back to my channel. In the last episode, I took you around old Dhaka, but in today's episode, I am going to take you to a whole other world that exists in Dhaka itself. Yes, we are talking about Gulshan. This is a huge area which is known for its skyscrapers and corporate offices and trendy cafes and very, very expensive residential societies. Let's take you around. It's very fascinating. One of the most manicured areas in all of Dhaka is this area in Gulshan that is dedicated to embassies, high commissions and consulates of all sorts of countries. It looks spectacular in all directions. I think the next industry that the government should really focus on is tourism and hospitality. And there will be no country like Bangladesh in Southeast Asia. There is actually no country like Bangladesh in Southeast Asia. It's incredible. The nature is insane. The skyscrapers are insane. And the culture, the diversity, the languages, the religion. There's so much to learn. I am so happy right now. I am so happy right now. There is also a lake in this area called the Gulshan Lake. And there are a lot of roadside vendors selling fruits and clothes and other things. This is what it looks like. I think that's a local market for Ramzan in the area. I see a lot of food. I actually smell a lot of food. In the place of the newly developed suburb Gulshan, there was an old village called Bhola. Gulshan was founded as a planned model town in 1961 and it was originally built with the purpose of being solely residential. Everything else cropped up much later. And yes, the cars all over Gulshan are a sight. I put this reel on Instagram and it got over 3.4 million views because people just couldn't believe that this indeed is Dhaka. I own a pickup truck myself, so I couldn't stop gawking at every 4x4 that I came across. It was just incredible. IKEA has a supply chain office here. There are world banks, all sorts of world banks. Cars have drivers and drivers actually get down to open the door for the employer. It's pretty cool. This entire area in Gulshan is pretty mind-blowing and very, very different from what I would have thought Dhaka is like. Or you. This is very surprising and amazing at the same time because Bangladesh is a country that deserves it all. There are lots of coffee shops in the area and I am currently outside Gloria Jean's Coffee. There's a La Tart bakery and patisserie next to it as well. Let's check it out. Fancy, fancy. I don't know if you believe in this, but I like to have my dessert first and then the meal. I'm sitting at La Tart bakery right now and I've ordered a raisin roll, and if I have to be completely honest, I am here for the AC.
I am shamelessly here for the AC because it's so hot outside. Ooh, it's warm and nice. This is only for 60 taka. Pretty cheap for Gulshan. So I've ordered a beef bagel. I already have my own coffee. The beef bagel was for 500 taka. I've already spent 60 taka on the raisin roll. So 560. Okay, so what I ordered is not available. I will have to change my order. Do you have the chicken steak burger? Okay, thank you. Chicken steak burger. Chicken steak burger. That's 100 taka more expensive. Just hoping that this is going to be good. Bangladesh is pretty famous for its jute and cotton. Oh man, I wish I could take these home. My plants will look so nice in them. Oh, I love this. I do not think you can ever have like an itinerary for Gulshan. Just walk around, watch old trees and new restaurants, observe people shopping, notice how different the cars are, maybe ponder over life. In the evenings though, immerse yourself in a gorgeous sunset rickshaw ride on the avenue and a good cup of fresh Bangladesh brew. So I've just come here to grab a quick cup of Americano, and I also want to try this place because I saw so many of North End Coffee Roasters branches all over Gulshan. So I was like, एक बार जाके try कर सकते हैं. And then we were crossing it, I was like, okay, one coffee बनता है. It was very nice. Okay, gotta go. Bye. Right now I'm in Dhaka. I spent 2 nights here and I'm on my way to catch a bus to Cox's Bazar. I've never been there. I did not go there on my last trip, so I'm really excited to explore Cox's Bazar and the nearby islands. Let's get going. See you in the next vlog. तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, कोई भी व्लॉगर विजिट करता है किसी एक कंट्री को तो उसके बारे में वो अच्छे से एक्सपीरियंस अपना बताता है और बयान करता है कि भाई फर्स्ट टाइम आज हम देख रहे हैं कि कोई इतना अच्छे तरीके से इंडियन व्लॉगर बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं और खास करके ढाका सिटी को। और ढाका सिटी में भी मुख्तलिफ जगह है, ओल्ड जगह है, न्यू जगह है। जैसे अगर आप ओल्ड साइड पे जाओगे तो आपको पुरानी ढाका मिलेगी जिसपे बहुत पुरानी जगह है, बट अगर आप नई साइड पे जाते हो तो आपको नई जगह मिलेंगे। जैसे कि गुलशन वाला एरिया है, गुलशन 1, गुलशन 2 एंड गुलशन 3, ये सारी वो जगह है जिसको ट्रैवल करने के लिए अंग्रेज भी देखने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बिल्कुल नई जगह है। डिजिटल बिलबोर्ड्स लगे होते ना, तो वैसे ही डिजिटल बिलबोर्ड्स ढाका की सिटी के अंदर गुलशन वाली एरिया के अंदर लगे हैं और सब इसको मिनी अमेरिका भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अमेरिका से बेहतर परफॉर्म कर रही है, जगह अच्छी बनाई गई है, लोग रहते हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन ज्यादा है और ये एक ऐसी सिटी के अंदर बनाया गया है जो कि आप समझते हैं कि ढाका पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा रहने वाली जगह है। मतलब ढाका के अंदर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, बांग्लादेश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली जगह है। तो इसीलिए भी लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, विजिट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बयान करते हैं। और इससे पहले भी कई सारे इंडियन व्लॉगर आए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बयान किया उन लोगों ने और वो बताते रहते हैं। तो इस तरीके से इस इंडियन व्लॉगर ने भी अपना एक्सपीरियंस बयान किया और बताया कि भाई किस तरीके से आपने ट्रैवल करना है, आना है और आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें।